ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਏ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫॉर ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। About you that you were able to do something so inhumanly brave and daring. And he gave the same answer that every other soldier I've asked the same question to is there, which is that anybody in my position would have done the same thing. I happened to be in a position where I had to make those decisions. And any other soldier, brother or sister, who was thrust into that same situation where they had to make life and death calls would have done the same thing. Which is, if you think about it, one of the most amazing answers to give, because these are people who've done things which are beyond superhuman. They are beyond appreciation and admiration, and yet when you ask them about it, their impulsive emotion is complete humility. So I think that's what makes a hero. Thank you so much. Again, I would ask this question. These daring men, we don't know whether they are in detention centers, we do not know whether they're alive or killed, their families do not know. So what do you think made them these heroes who went across in 65 and 71, they went into army territory, fearless, and what was it that distinguishes them from an ordinary layman to be able to take a risk, leave their families, wives at home? Thank you very much for having me here. Taking off from what Shiv just said, that anybody in their place would have done the same. So it all boils down to training and loyalty for one's regiment or battalion or squadron. So it is, the izzat of the regiment stands out over and above everything else for a normal Fauji, whether he's a soldier or an officer or anything. And just to illustrate this point, I would like to tell you about one incident from my book about Wing Commander H.S. Gill. He was commanding number 47 squadron, which was operational in Jamnagar during the 1971 war, and they were tasked to destroy enemy a signal complex in Badin, somewhere near Sindh, across in East Pakistan. In what is now Pakistan, what we call it, not Bangladesh. So the signal complex was very heavily reinforced, and whatever ammunition, they had already conducted 2-3 sorties and they were unable to destroy or even penetrate it. So eventually they had a little discussion in the airbase in Jamnagar and decided, okay, let's use some more powerful ammunition, the S-24 rockets. They were supposed to use those, but before the aircraft could be equipped with those new missiles, they were asked to do one more sortie. So they had to go in with the old ammunition. And As terribly unfair that these sort of life-changing stories were dismissed away in a small little paragraph and a couple of minutes with the president and with a scroll. So that's the reason why we decided to work with families. And I can again, the writing these stories is very, as Chandra ma'am will most certainly agree, they are extremely emotionally taxing. And Chandra ma'am is much stronger than I am because she belongs to a defense family, so it runs in her blood, so she knows what it's like. I'm a civilian, I'm an outsider. So for me to actually get into that whole emotion of what it takes to be a military family, has been a harrowing experience. It's been an emotionally exhausting experience because it was not what I had expected at all. And I can only, since you're asking about one incident, I'll tell you that there was in my second book, in India's Most Fearless 2, the opening chapter is about an officer called Major Mohit Sharma.
Ashok Chandra posthumous. He was an incredible officer from the 1 Para Special Forces who was killed in action in a really scary anti-terror mission in a place called Afruda in Jammu and Kashmir. After the book was published, I went to see his parents who live in Ghaziabad near Delhi, and we had been told that his mother is emotionally very fragile. It's been many years since that happened, but to lose a child is to lose a child. And I had gone to meet them, and obviously his mother was very emotional, but she was being very brave because we had come, and she was happy that we had written a book about her son. But I will never forget it. I took a picture of this. I felt guilty taking a picture of this, but I needed to take that moment. She was sitting alone in his room with our book, and she just started weeping into the book. For me, that was that moment of great grief, but also a great deal of happiness that in the written word there is immortality. And I think that's what families see in books like Chandraman's Mine and others who've written about military heroes. सबसे पहले तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, शारदा मैम बहुत अच्छी राइटर है खुद भी, और सच कहूँ तो मुझे उनकी एक किताब से बड़ी जेलसी हुई थी, ये मुझे क्यों नहीं मिली। इन्होंने हमारे एक साथी हैं जुबिंदर जीत सिंह, उनकी एक बुक इन्होंने ट्रांसलेट की थी, शहीद भगत सिंह की पिस्तौल। वो वास्तव में इन्होंने इतनी खूबसूरती से उतारा उसको, वो दिल को छूने वाली बात थी। तो सब्जेक्ट ऐसा था कि हम लोगों को भावना जगह था, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। मैं बहुत उसमें था कि ये बुक मेरे हाथ से कैसे मिस हुई। मैं बड़ा गिला करता रहा, यार मुझे क्यों नहीं दी गई आपने, पहले आप देते तो मिलते तो हम आपको जरूर देते। लेकिन सच कहूँ, मैं दिल से तारीफ करना चाहूँ शायद मैम, वो वास्तव में आपने बहुत खूबसूरत से लिखी, बहुत अच्छे से लिखी। हालांकि जुबिंदर की मुझे 2 बुक्स और लिखने का मौका मिला। अब मैं जरूर कहना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा याद आ गई बात, शब्दों का चयन। उर्दू हिंदी की बात हो रही है, कुछ शब्द हैं शायद आप लोगों ने सुने हो, इल्लत, जिल्लत और किल्लत, बहुत खूबसूरत शब्द है। शायद मेरे ख्याल बहुत लोग जानते भी होंगे, शायद यंग बच्चे को जानते हो बताइए, इल्लत, जिल्लत और किल्लत। जिल्लत मालूम है? इल्लत यानी रोग, बीमारी, जिल्लत यानी बेइज्जती और किल्लत यानी परेशानी। किल्लत कभी किसी चीज की। अब इन शब्दों को देखिए, हम लोगों को हमारे साथ, हम जो ट्रांसलेटर की बात करें, हम लोगों को शब्दों में खेलने का बहुत मजा आता है। सच बात तो ये है, हम लोग उसमें एंजॉय करते हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया। अच्छा, अरे ये इल्लत, जिल्लत, किल्लत, मैंने भी जब बहुत बचपन में, मेरे सिंस माय फादर वाज अ टीचर और उर्दू टीचर थे, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। अब आती है बात आपके सवाल की कि भाषा को हम लोग कैसे एक्सेप्ट करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज के दौर में अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो एक भाषा पे हम पूरी तरह डिपेंड नहीं कर सकते, निर्भर नहीं कर सकते। हमको दूसरी भाषाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, और खासतौर पे हमारी अपनी माँ बोलियाँ, जिसमें पंजाबी भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, ये अपनी भाषा है। जैसा कि उन्होंने कहा अभी पिछले सेशन में कि साफी अलह, साफी मीन्स पत्रकार। शायद पत्रकार जानते, अपने जो स्टूडेंट है जानते हैं आप साफी किसको कहते हैं? उर्दू में साफी को जर्नलिस्ट कहते हैं, और अल हिंद क्योंकि लीबिया में बिल्कुल फारसी बोली जाती, तो हिंदुस्तान को अल हिंद कहते हैं। ये छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। अब क्योंकि हम लोग तो एक तरह से, मैंने आपसे जैसे कहा कि शब्दों से खेलने का शौक है, और जब शौक होगा तो जो नई बॉल आएगी हम जरूर एक्सेप्ट करें। जी रवि जी। शायद मेरी नज़र च जिन्ना क बच्चे सीखणगे ज़्यादा ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਪਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪੱਬੇ ਨਾਲ BH। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ H ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾ, ਸਾਡੇ ਢੱਡਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਡੱਡਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਪੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਪੱਪਾ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਦਸੀਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਬਾਦਸੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ भी है। जी, ये बहुत सुंदर बात है जो रसूल हमजा तो का एक नॉवल है मेरा दागिस्तान। मेरा दागिस्तान एक जगह है सेंट्रल एशियन रीजन में रूस के साथ, और जब ये किताब लिखी गई थी तो वो रूस का हिस्सा था मेरे ख्याल से। और 2 हिस्सों में है वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए जिनको भी किताबों का शौक़ है। वो किताब ऐसी है कि इसको आप बार बार पढ़ते हैं और हर बार आप उससे कुछ सीखते हैं। तो जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वो सिर्फ किताब से किताब तक जाना नहीं है, वो एक कल्चर और एक पूरे विरसे को जानना और समझना भी है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ लिया जा सकता है कि जब मुग़ल भारत में आए, और जैसे क्योंकि मैंने बाबर की किताब की तो मैंने उसको बहुत ध्यान से पढ़ा और मुझे समझ आया कि एक थका हुआ लुटा पिटा वॉरियर जब हिंदुस्तान पहुंचता है तो उसको लगता है ये जन्नत जैसी जगह है, और किस तरह से उसको उसने यहाँ